हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल जी चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है एचपी का प्रिंटर, एचपी का LaserJet P1005 मॉडल का प्रिंटर है। और यहाँ पर इसका एरर क्या दिखाता है आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से दोनों लाइट यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं और इसका प्रॉब्लम और क्या दिखाता है अब हम यहाँ पर काउंटर के स्क्रीन में देखेंगे और वहाँ पे क्या दिखाता है इसका स्टेटस, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। और से मैं चलता हूँ यहाँ पर काउंटर के स्क्रीन पर, तो यहाँ पर इसका एरर क्या दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर्स और ये रहा हमारा प्रिंटर, और यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट टेस्ट करता हूँ। ये देखिए, और प्रिंट कमांड देने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर हमारा प्रिंटर तो चालू हो रहा है, लेकिन इस तरह का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, HP LaserJet P1005 स्टेटस मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है 52.0 स्कैनर एरर टू कंटिन्यू टर्न द डिवाइस ऑफ देन टर्न ऑन। इस तरह से यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये HP का प्रिंटर है। तो इस एरर को हम किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं आपको वीडियो में देखते रहना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिर से इसकी यहाँ पर हमारा प्रिंटर के सामने दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और लाइट भी यहाँ पर ये देखिए, थोड़ी यहाँ पर क्लियर लाइट भी यहाँ पर रखा हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर हम पावर को ऑफ करेंगे और ये जितने हम यहाँ पर वायर्स कनेक्टेड है देखिए। फटाफट से हम क्या करेंगे यहाँ पर, फटाफट से हम यहाँ पर करेंगे जितने भी यहाँ पर इसमें है सारे को यहाँ पर ओपन करेंगे हम। हमारा स्कैनर जो इधर दिखा रहा है, हमारे यहाँ पर लेजर स्कैनर है, तो इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। इस तरह का जब इशू आएगा यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर स्पैड ने यहाँ पर अपना घर बना रखा है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डस्ट से भरा हुआ है हमारा स्कैनर। और ये जो लेज़र यूनिट है देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर था, ठीक है दोस्तों। इसी की वजह से भी यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल से हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, ठीक है। इसको हम फ्लोर से भी साफ करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको इतने ही मैं क्लीन कर दिया, ठीक है। इसको मैं इस तरह से इसको भी क्लीन करता हूँ थोड़ी सी। इतने क्लीन करने के बाद यार इसको मैं लगाता हूँ तार से।
दोस्तों यहाँ पर इसको रेडी कर दिया, ठीक है। फटाक से यहाँ पर मैं पावर लगाता हूँ, देखिए पावर लगा दिया। और प्रिंटर केबल भी लगाता हूँ यहाँ पर डिलीवर, ठीक है। इसी हालत में मैं टेस्ट करूँगा, बाकी पहले यहाँ पर कवर होता है, मैं बाद में लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ लगा दिया और पावर ऑन करता हूँ। देखिए पावर ऑन हो चुका है हमारा। वन साइड में प्रिंटेड है दोस्तों, ठीक है। देखिए पेपर, और दूसरे साइड में यहाँ पर पेपर डालता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या देता है, मिनट देता है नहीं देता है, हम देखेंगे आपको, ठीक है। और पहले का भी कमांड था दोस्तों, ये देखिए। इससे आगे जो कमांड था वो भी यहाँ पर क्या करता है, ठीक है। ये देखिए, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और एक और मैं यहाँ पर प्रिंट टेस्ट करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल खाली पेज है ये, दोनों साइड में खाली है। और एक और पेज प्रिंट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था, इसमें स्कैनर रीडर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम किसी लेंगे जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। बाय बाय।